In this module, we will be talking about hypothesis testing, what are different types of hypotheses, and how to define a hypothesis. A hypothesis is a statement which is to be tested for possible rejection or acceptance. Now, students, in our daily life, we are going to make certain kind of statements which may be testifiable. Supposingly, if I'm making a statement that I'll go abroad next year, so this may be testifiable statement. Similarly, we can make certain statements such as it will be a rainy day tomorrow. Again, we would have to test that statement so that we can come up to various sort of conclusions. Let us take an example for that. A teacher may suspect, on the basis of several years of experience, that a certain kind of physical condition that impede learning. Again, students, unless otherwise we come up to the conclusions, we can't trust on this statement unless we check that statement. Let us take another example. A physician observes that some patients are short of breath after taking a certain drug, may suspect that the drug has adverse side effects on some of the patients. Now, we cannot generalize the statement unless otherwise we test it on certain patients. Now students, हाइपोथेसिस की दो टाइप्स होती हैं. एक होते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है alternative hypothesis. Null hypothesis is denoted as H0, whereas the alternative hypothesis is denoted as H1. So the null hypothesis is a statement about no difference or about no effect, or it is simply a status quo. Now we may test the null hypothesis that there is no difference in the effects of the true drugs that are to be administered onto certain patients for curing certain disease. अब नल हाइपोथेसिस को स्टूडेंट्स हम तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज हमारे पास कोई एविडेंस होगा उसको एक्सेप्ट करने का. अगर आप कोर्ट ट्रायल की फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लें तो जब कोर्ट में कोई पर्सन आता है तो वी मेक द स्टेटमेंट दैट द पर्सन इज़ गिल्टी. अब एक स्टेटमेंट हमने ये दी है कि पर्सन गिल्टी है. उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में जज जो है उनका प्रोसेस ये है कोर्ट ट्रायल का कि वो एविडेंसेस लेंगे. उन एविडेंसेस को वो जज करेंगे. अगर वो एविडेंसेस दे वुड बी इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट तो उस पर्सन को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाएगा. लेकिन अगर वो एविडेंसेस अगेंस्ट जाएंगी उस कैंडिडेट के तो उसको गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा. सो जब भी हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं, हाइपोथेसिस, टेस्टिफाइबल हाइपोथेसिस लेते हैं, देन वी नीड द एविडेंस टू सपोर्ट देम. So this is the entire process of a hypothesis testing. So students, we have learned that in hypothesis testing, first of all we make a statement, then to make a pair in case that H0 is not accepted, we should have an alternative statement जिसको हमने H1 का नाम दिया. So वो डिसाइड करने के बाद आप देखते हैं एविडेंस लेते हैं. एविडेंस कहाँ से आता है? एविडेंस यूजुअली कम फ्रॉम द सैम्पल. अगर एविडेंस आपका सपोर्ट करेगा आपके हाइपोथेसिस को तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट करते हैं.